Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, were we made to fall? Hi everyone, it's like 1 p.m. on 13th February and I have my board exam in just 1 week. Now that is very huge. That is something big. It's like a big deal. But we're gonna ace it because ab 1 week tak I'm gonna only study English. I don't know how good of a decision this is, but the thing is that I'm not really prepared for my English board exam. I haven't even done the question answers. I have only read the chapters from here and there, but still there's a lot that needs to be done. And hence I will be needing 1 week according to my calculations. And I don't know, I just really think it is a good idea. And I hope it is a good idea, so fingers crossed for that. Also, मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैं कल रात भी लेट सोई थी, which makes it even more worse क्योंकि लेट उठना एंड उसके बाद पढ़ने का डिसाइड करना दोनों बहुत ही ऑपोजिट चीज़ें हैं. मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है एंड आई एम गोना स्किप टेकिंग अ शावर टुडे जस्ट बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू. और मैंने कल ही शावर लिया था, ऑल्दो अब इतनी कोई सर्दी नहीं है, बट स्टिल I already made the to-do list yesterday night only, so to-do list बनाने का काम तो नहीं करना पड़ेगा. That means we won't have more time to waste. Anyways, so to-do list तो बन चुकी है. अब I have to figure out my breakfast and then maybe jump on to the studying part, which is gonna be way tougher than anything else. Anyways, I just say a lot of anyways. That is what I've figured out after watching my videos. But anyways, nobody watches it, so that's fine. Alright, fine. So let's go and start this journey of 1 week studying English. And yeah, best of luck to all of you who are going to give your board exams, and wish me luck as well because ye zaruri hai. Let's support each other. Now that I've wasted a couple of minutes on YouTube and a couple of hours sleeping, why not just start studying directly after having my breakfast? Let's just go. I'm finally going and I'm going to start studying. Also, the agenda for today is to complete some English. Yeah, that is our agenda. But मैंने जो अपनी to-do list बनाई है वो थोड़ी सी integrated है. That means it doesn't only contains English. It contains bits of pol science, bits of psychology. मुझे नहीं पता इतना हो भी पाएगा या नहीं, but आज मेरे को विस्तास complete करनी है, फ्लेमिंगो complete करनी है, and then 2 chapters of psychology and politica मुझे एक revision करना है. So that is left. Let us do that. In 3, 2, 1, go. So I was doing the chapter called the third level, and what I'm doing is I'm reading the text first and then I'm watching a video which is basically an explanation video where they tell everything about the theme and the summary of the chapter, basically the concise form of chapter. And then I'm referring to some extra questions from this book. This is a reference book I'm using for English. And also I'm referring to the past 5 years papers to get the gist of the questions that are very popular in the CBSE board exam.
and that is how I'm preparing each and every chapter. Abhi sirf ek chapter hua hai and it has been 2 hours, so of course it is time consuming, but I feel it is the best strategy to complete everything. Let's do it. So this is what my laptop screen looks like. I'm watching Libro review because I love her videos. I love her bookish content, and if you guys are really interested in some book content and you want an Indian booktuber in your life, then she is the one. She is the best Indian booktuber ever. And side by side I'm solving some questions from this site called CBSE Guidance, and yeah, that is about it. It's 6:28 and I've studied for almost 4 hours, and I was able to complete a fraction of that video, the 5-hour video, and I was able to complete 2 chapters. Third level तो मैंने पहले ही बोल दिया था मेरा हो गया है. Second chapter I did was the Tiger King, and I have done everything from the video only. Abhi I'm not using this book to revise, I'm only using this book to figure out the questions. And yeah, I'm done with these 2 chapters. Let us go and switch our subjects now, क्योंकि अब मैं English से थोड़ा सा tired up हो गई हूँ. I just don't want to do English anymore, so maybe I'll do it afterwards, but अभी के लिए what I'm gonna do is I'm gonna switch to psychology just for a change, just so that I can focus my attention again, and I'll do that after a mini break. Trust me guys, I need a break, and let me just take it. So I completed psychology and I shifted in the room क्योंकि टेबल पे बहुत ज़्यादा ही मैं देर बैठी थी, and it got a little tiring for me. So psychology का एक chapter करने के बाद now I'm gonna do Journey to the End of the Earth. This is the 3rd chapter in today's tasks, and yes, wish me luck. So I am aware that the last time I shooted, I was doing Journey to the End of the Earth, but it's 15th February today, and I continued studying English only. Vistas abhi bhi complete nahi hui thi, so abhi sham ke 6 baj rahe hain, and finally I have done Vistas. Memories of Childhood is done. Then I've also done On the Face of It, and I did the question answers and PYQs for Journey to the End of the Earth, which was very, very important to do. Secondly, I did complete the enemy as well, and बस यहाँ से मैंने आज करना शुरू किया, and I'm finally done with Vistas. I don't know, it feels so good क्योंकि मेरा बहुत सारा weight जो है
वो पूरा डिक्रीज़ हो गया है आफ्टर डूइंग दिस वन बुक. बट अभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुए हैं. आई स्टिल एम लेफ्ट विद दिस मच अमाउंट ऑफ सिलेबस. यहाँ पे मेरे पास लास्ट लेसन है अभी, लॉ स्प्रिंग है, डीप वाटर है, रैट ट्रैप है, इंडिगो है, पोइट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस. सो अभी ये 8 चैप्टर्स तो बचे ही हैं. एंड एट द सेम टाइम आई हैव 5 पोम्स लेफ्ट एज वेल. तो कुछ भी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है. आज के दिन मैंने सिर्फ 5 hours 35 minutes पढ़ाई की थी. तो इट वॉज हेक्टिक बट इट इज़ वॉट इट इज़. मुझे कंप्लीट भी करना था. तो ऑफकोर्स आई एम नॉट कंप्लेनिंग एंड आई एम वॉचिंग दिस स्टडी विद मी. आई जस्ट गेट दिस सडन upsurge of motivation when I'm watching other people studying. Let's take a quick update and a quick sneak peek at what I'm going to be doing before my English board exams. It might help you. So first of all, I made this plan on 14th February, that is yesterday. And on 15th February, I'm supposed to be completing Vistas, which I'm already done with. And I have to complete Flamingo की poems. And then Flamingo के बाकी के chapters and one sample paper. मैंने हर दिन almost एक sample paper solve करने रखा ही है. क्योंकि I really wanted to do sample papers. मैंने English का एक भी sample paper solve नहीं किया है अभी तक. And I regret it so much. But it's fine. We can do 7 sample papers in 7 days. And 16th February में I'm going to do writing section, one sample paper and practice some passages. 17th February में मैं extract based questions करूँगी which are very very tricky when it comes to solving them. So I'm gonna do that and a sample paper and of course revision तो होगा ही Flamingo के chapters का. And if in case you guys are wondering कि मैं क्या बोल रही हूँ Flamingo and Vistas, these are the names of the 2 books I have in my English class 12 CBSE course. And 18 February को फिर finally revision होगा दोबारा से and sample papers होंगे. मतलब मेन पॉइंट ये है कि 17th February तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. तो इट वुड बी गुड. एंड बाकी के टाइम सिर्फ रिविजन एंड सैम्पल पेपर्स करने होंगे. एंड 21st February के लिए मैंने स्पेशली NCERT रीडिंग रखी ही है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं NCERT पढ़ के ही जाऊँ एग्जाम में. एंड दैट इज़ इट. आज के टास्क मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए थे विद द टाइम लाइन एज वेल. लेकिन टाइम लाइन तो फॉलो नहीं हो पा रही है. बट जो भी है एटलीस्ट वी कम्प्लीटेड अ बुक. सो दैट्स अ रैप. नॉट फॉर टुडे. अभी फ्लेमिंगो भी करेंगे. लेट्स गो.
welcome to day 2 of this series. I was not actually making it into a series, but abhi subah mujhko click hua ki why not make it into a series. Although it is very risky to vlog before boards, but it is fine, it is okay, we can do this. And English ka exam hai, so I'm not too much hyper stressed about it. तो इसलिए मेरी स्टेटमेंट्स रोज़ चेंज होती हैं. आई नो लास्ट क्लिप में मैंने ये कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन तब से मेरी एक बुक ख़त्म हुई है. आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल लाइटर एंड या दैट इज़ व्हाई दिस इज़ डे 2 इन द सीरीज़ एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लेमिंगो टुडे. कल मैंने फ्लेमिंगो की पोएम्स रीड थ्रू कर ली थी एंड आई डिड द थीम्स एंड इंट्रोडक्शंस एंड सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन वो इनफ नहीं है. आई हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. बट आज का एजेंडा ये है कि आज मैं करने वाली हूँ फ्लेमिंगो के चैप्टर्स. 8 चैप्टर्स हैं टोटल और एक मैंने अभी कर लिया है. मैंने 1 घंटा ही पढ़ा है सुबह से, क्योंकि एक तो मैं लेट उठी थी क्योंकि कल रात मैं लेट सोई थी. सो एक मैंने कर लिया है और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं लास्ट का लूँगी, क्योंकि मुझे टफ चैप्टर्स पहले करने हैं अब और लाइटर चैप्टर्स बाद में करेंगे, क्योंकि वरना एंड में एनर्जी बचती नहीं है करने की एंड यू डोंट गिव इट योर ऑल. सो या दैट इज़ इट. अभी I'm gonna have lunch, I'm gonna take a break. मुझे 1 घंटे का भी ब्रेक चाहिए तो मैं लूँगी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है एंड दैट इज़ व्हाई आई डिजर्व अ ब्रेक एंड एवरीवन डिजर्व्स अ ब्रेक. सो दिस इज़ योर साइन टू टेक अ ब्रेक इफ़ यू हैवंट अंटिल नाउ. डोंट बी स्ट्रेस. अभी 5 दिन है, हो जाएगा. इंग्लिश है, इट्स वेरी ईजी. अगर आप लिटरेचर पार्ट को कवर कर लो, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, तो उसके बाद जो भी बचता है दैट बिकम्स वेरी ईजी, क्योंकि मोस्टली इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, हाउ यू राइटिंग द लेटर, हाउ यू राइटिंग द इन्विटेशन, हाउ यू राइटिंग एवरीथिंग एल्स. एंड पैसेज के लिए जस्ट प्रैक्टिस एज मेनी पैसेजेस एज यू कैन एट योर होम एंड डोंट प्रैक्टिस वेरी नॉर्मल से पैसेजेस. प्रैक्टिस द टफ वंस, मतलब तभी फ़ायदा होगा, तभी यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. दैट इज़ इट फॉर द इंट्रो. आई थिंक मैंने काफ़ी बोल लिया है. सो लेट अस गो हैव सम लंच एंड गेट बैक टू स्टडीइंग. I've been thinking about myself today, thinking how I've changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. So I was reading this chapter called Going Places, and there's a character in the story named Sophie. She's very imaginative and she daydreams a lot. She fantasizes about dating this Irish prodigy who is a footballer, and she basically daydreams about everything out of this world, and she wants to raise her economic status and rise into the hierarchy of finances and everything. So she has a lot of dreams, like a lot of dreams. She's not fixated on one dream, she has multiple dreams. And after reading the chapter, I kind of realized that I connect to her character, because somewhere down the line, even I am like that. And this gave me a reality check. It made me question my own existence.
I don't know, I just have a lot of dreams, I have a lot of ambitions, I have a lot of passions. I'm passionate about too many things, and I daydream sometimes. So it makes me question myself and my sanity. But anyways, that is what it is about. I just wanted to share this because this is what we miss out when we study English. I personally enjoyed English from the beginning of it, and that is because I usually also read a lot of books, or at least I try to read a lot of books. And that is why whenever I used to read the chapters, I always used to pay attention to the characters, pay attention to the plot, pay attention to the storyline and everything. But in 12th what happened was कि मेरा वो connect छूट गया English से, and I wasn't able to connect anymore क्योंकि मैं सिर्फ marks के लिए कर रही थी ये. But now that I have a little more time and I'm studying it thoroughly, I'm kind of paying attention to it, and I have a vibe over here. I have candle, I have the music, I have everything. So अब finally वो settle हो रहा है, and I'm finally able to connect to the characters. ऑल्सो अभी चैप्टर रीड तो मैंने कर लिया, लेकिन अब इसमें और भी चीज़ें करनी बाकी हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन सॉल्व देम इन द नोटबुक. मैं क्वेश्चन आंसर्स देख के ही करती हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे तो याद नहीं होते हैं. And I do what I do. I do my thing, you do your thing. It's up to you. I'm not really suggesting you anything right now. I'll only give advices after I'm done with my board exams. उससे पहले मैं कोई advice देना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि it's useless, it's futile before board exams. तो कोई मतलब ही नहीं है. मतलब who am I to give you guys advices and tips about things? No, I'm no one. I just talk a lot sometimes. I need to shut up and study. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. अपडेट टाइम. तो मैंने ये चैप्टर कर लिया है द इंटरव्यू. इससे पहले मैंने ये चैप्टर किया था विच इज़ नोन एज गोइंग प्लेसेस, जिसके बारे में मैंने एक अपडेट दी ही थी. एंड लास्ट लेसन मैंने सुबह किया था. आज का डे थोड़ा कम प्रोडक्टिव था. आई वॉज ओनली एबल टू कम्प्लीट 3 चैप्टर्स, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा दिन बचा है. मेरे 5 चैप्टर और रहते हैं फ्लेमिंगो के, एंड पोएम्स का भी रिविजन मैं कर ही लूँगी बाद में. बट दिस इज़ वॉट वी आर लेफ्ट विद, एंड आई थिंक ये हो जाएगा. एंड फाइनली आई विल बी एबल टू डू सम सैम्पल पेपर टुडे. कल का मैंने सैम्पल पेपर नहीं किया था तो मेरा थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था, बट आज आई विल ट्राई टू डू इट. और फिलहाल मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, अ मिनी ब्रेक फॉर 15-30 मिनट्स, ताकि मैं कुछ खा सकूं. बिकॉज ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम सीजन में बहुत भूख लगती है. आई एम गोना वॉच यूट्यूब विद इट ऑब्वियसली. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मुझे ये स्नैक पर्सनली बहुत पसंद है. इट इज़ वेरी क्रंची एंड वेरी वेरी नाइस. ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आई लव दिस ब्रांड एंड आई लव इट्स स्नैक्स. मतलब इट इज़ सो रिफ्रेशिंग. सो आई एम गोना गो एंड हैव इट विद माई टी. टी यहाँ पे अभी कुकी हो रही है, तो या विल जस्ट हैव दिस. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Hi, so it's day 3 of this Start English Syllabus with Me series, and we are
ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इट, क्योंकि टोटल 6 डेज ही थे सीरीज़ के अंदर, तो हमने ऑलमोस्ट हाफ टास्क कंप्लीट कर ही लिए हैं. बट स्टिल वी रियली नीड अ लॉट मोर रिविजन, अ लॉट मोर प्रैक्टिस एंड अ लॉट मोर पेशेंस. सो आज का दिन मैं थोड़ा रात डिसाइड करने वाली हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. अभी एक्चुअली मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं है. फिलहाल 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट. सो आई डोंट रियली नो मैंने सुबह से क्या किया. आई काइंड ऑफ वेस्टेड माई डे, बट आई वॉज हैविंग जस्ट सम फन. मतलब थोड़ा सा मुझे रहता है कि उठने के बाद आई ईट समथिंग, आई टेक शावर एंड आई डांस अ बिट. I do make sure that every day I'm feeling happy, and I only feel happy when I'm doing some activity. Maybe I'm reading a book, or maybe I'm dancing for that matter. It really doesn't really have to be one specific activity. A lot of things make me happy, and hence I do a lot of things to make myself happy. लेकिन अभी इस circumstance में I can't read a book actually, क्योंकि अगर मैं कोई book पढ़ती हूँ तो I need to complete it and I make sure that I film the process of it. But this time I can't really film me reading a book or basically a reading blog. तो इसलिए So इसलिए what I did was I dance, and I do that almost on every second day. I try to do that, and that just makes me feel more energetic, more thriving, and more eventful. Yeah. So that was it from 9 to 12. I woke up at 9, तो मैंने 12 तक dance किया. I had my breakfast and I took shower. I got cleaned up and I brushed my hair as well. So now we are done with all the personal care stuff. Now let's cut to the chase by finally coming to the मुद्दा ये है कि आज मैंने सोचा है कि मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करूँ सारी पोम्स प्लस चैप्टर्स के, बिकॉज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं. सेकेंडली आई हैव टू कंप्लीट द सैम्पल पेपर दैट आई स्टार्टेड येस्टरडे. जो मैंने कल सैम्पल पेपर किया था वो मैंने सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट किया था. इवन सेक्शन बी में से भी आर्टिकल राइटिंग मेरा रह ही गया था, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है. एंड बाकी का लिटरेचर पार्ट तो मुझे कवर करना ही है, तो वो मेरा रहता है. आई हैव टू कंप्लीट दैट एंड आई विल डू अनदर सैम्पल पेपर में भी, अगर मेरे को टाइम मिला तो. एंड उसके अलावा मुझे पोएम्स दोबारा से रिवाइज करनी है विद देयर इंटरप्रिटेशंस एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने पोएम्स की थी तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे वो ढंग से नहीं हो रही हैं. आई हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. वैसे तो हमें चॉइस मिलती है हमेशा क्वेश्चन पेपर में, बट लक का कुछ पता नहीं है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो प्रिपेयर करके नहीं जाते बिकॉज वो चॉइस में आएगा, लेकिन कभी कभी चॉइस आती ही नहीं है. सो फॉर दैट मैटर आई विल कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग एज वेल. तो ये सब करने के बाद फाइनली आज का डे ओवर होगा. आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ऑफ हेक्टिक डे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आज का मेरा आर्ट्स का टारगेट नहीं है. आज का मेन गोल है कि मुझे सारे टास्क कंप्लीट करने हैं. अगर ये हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो विल सी व्हाट हैपेंस. बट फॉर नाउ लेट्स डू दीज टास्क्स. Talk to throw a bone. For a while, sleeping like a bee. The curiosity keep the cat alive. You see. Stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. What's been changing and it's so apparent. Caught a